सो हेलो। अब हम लोग मॉक नंबर फर्स्ट करेंगे। पहले सेकंड कर चुके हैं, फर्स्ट करने से बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका के निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत के में ड्रग प्रूविंग के दौरान दवा लेने के बाद लक्षण दिखने के समय दवा लेने के 12 घंटे या 24 घंटे के बाद प्रकट होता है? आंसर है एलन एनसाइक्लोपीडिया प्योर मटेरियल मेडिका। डॉक्टर टी.एफ. एलन और टिमोथी फील्ड एलन की एनसाइक्लोपीडिया ऑफ प्योर मटेरियल मेडिका प्रमाणित ड्रग प्रूविंग के लक्षणों का एक विशाल संग्रह। इस कार्य की एक अनूठी विशेषता है कि इसमें ड्रग प्रूविंग के दौरान प्रोवर्स के दैनिक रिकॉर्ड के आधार पर लक्षणों को प्रकट होने का सटीक समय दर्शाया गया। Hearing it is a primary arrange according to Hahnemann schema anatomical order, but focus mainly on confirmed verified symptoms. इनका मुख्य ध्यान ड्रग प्रूविंग के कालानुक्रम समय के बजाय क्लिनिकल रूप में सस्ता है। Chronic disease by Hahnemann contain the symptom of antisoric, antisyphilitic, antipsychotic remedies arranged in standard anatomical schemas. Written by Material Medica Pure, written by Dr. Samuel Hahnemann, it contains pure effect of medicines arranged from head to foot, but does not record the overly chronological layout like Allen's encyclopedia. The Encyclopedia Pure Materia Medica by Dr. T.F. Allen is a practice of medicine. Match the following fracture with their respect. जोन्स फ्रैक्चर फिफ्थ मेटाटार्सल, पैर की पांचवी मेटाटार्सल हड्डी के आधार पर फ्रैक्चर। बेनेट फ्रैक्चर फर्स्ट मेटाटार्सल मेटाकार्पल है, अंगूठे की पहली मेटाकार्पल हड्डी के आधार पर। मार्च फ्रैक्चर भारी मार्चिंग के कारण शरीकों में होने वाला स्ट्रेस फ्रैक्चर जो अक्सर दूसरी मेटाटार्सल में होता है, सेकेंड मेटाटार्सल। बॉक्सर फ्रैक्चर फिफ्थ मेटाकार्पल fracture of neck of fifth metacarpal bone and of the hand is usually caused by punching of hard object. हाथ की पांचवी मेटाकार्पल नेक का फ्रैक्चर जो आमतौर पर मुक्का मारने से होता है। Which of the following embryogenic structure is responsible for forming ovarian ligament in the adult female? निम्नलिखित में से भ्रूणीय संरचना एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर वयस्क महिला में डिंब ग्रंथि ओवेरियन लिगामेंट बनाने के लिए कौन सा है? Gubernaculum is a mesenchymal cord that connect the developing gonad to the labioscrotal swelling in females. The gubernaculum persists and attach to the uterus, dividing into two parts. The cranial part become the ovarian ligament, connecting to the ovary. मेसोनेफ्रिक या वॉल्फियन डक्ट जो होता है, ये पुरुषों के जननांग बनाता है। वॉल्फियन डक्ट महिलाओं में नष्ट हो जाता है। यूरोजिनाइटल फोल्ड ये महिलाओं में लेबिया माइनोरा बनाता है। Processus vaginalis, an invagination of peritoneum that precedes the descent of testes. Its failure to obliterate leads to congenital hydrocele or hernia. On the basis of alcohol strength, 80 overproof is equivalent to 102.8%. Percentage weight volume by volume का proof value plus 100 upon 1.752. Who authorized the second homeopathic pharmacopoeia? Von William Schwabe. Dr. William Schwabe published the Pharmacopoeia Homeopathic Polyvata in 1872 in the German language. Its second edition, published in 1880, was rendered in English and was highly accepted globally, sponsored by German authorities. डॉक्टर विलियम स्वाबे ने 1872 में जर्मन भाषा में फार्माकोपिया होम्योपैथिक पालिक डाटा
प्रकाशित की। Dr. C. Caspary, known for early dispensatory work for homeopathic writing, but not the author of this specific volume of pharmacopoeia. British Pharmacopoeia Society authorized the British Homeopathic Pharmacopoeia, first published in 1870. Burick and Tuffel, famous American homeopathic publishers and pharmacists who published the American homeopathy. Given below are two statements regarding type of pharmacy. Institutional pharmacy relate to the various aspects standardization, manufacturing, retail, and also include administrative and hospital pharmacy. Extemporaneous pharmacy, preparing and dispensing medicine according to direction of physician and is done at dispensary level. न्यूरोजेनरेटिव विकार वाले एक 65 वर्षीय रोगी में आयरन संचयन और लिपिड परऑक्सीडेशन से न्यूरल मृत्यु पाई जाती है। कोशिका मृत्यु का कौन सा रोग इसमें शामिल होने में सबसे अधिक आयरन संचयन की बात कर रहे हैं तो फेरोप्टोसिस। Ferroptosis is a form of regulated cell death that is strictly dependent on intracellular iron accumulation. It is characterized by catastrophic accumulation of toxic lipid peroxidation, and reactive oxygenation species in the cell membrane. It is highly implicated in the neurodegenerative conditions like Alzheimer's and Parkinson's disease. Ferroptosis. Apoptosis क्या programmed cell death involving caspase, chromatin condensation and apoptotic bodies, not characterized primarily by iron-driven lipid peroxidation. Necrosis, unregulated accidental cell death due to extreme trauma leading to cell swelling and lysis. Pyroptosis, highly inflammatory form, programmed cell death triggered by infection and mediated by inflammasomes and gastromin. Case taking with respect to female disease in given aphorism. Footnote of aphorism number 94. 96 aphorism and footnote deal with the hypochondriac patient जो अपने लक्षणों को चढ़ा बढ़ा के बताते हैं। 96 aphorism और उसके एक 29 वर्षीय व्यक्ति छुरा घोंपने के घाव के साथ आता है। वो अपने हाथ को क्षैतिज उठा नहीं पाता। विंग्ड स्कैपुला नामक स्थिति प्रदर्शित करता है। ब्रेकियल प्लेक्सस की कौन सी संरचना से? रूट्स। Winged scapula is caused by paralysis of serratus anterior muscle, which innervated exclusively by long thoracic nerve, also known as nerve of Bell. The long thoracic nerve arises directly from the root of brachial plexus, specifically ventral rami of C5, C6, and C7. Stab wound in the neck region damaging these root origins lead to this deformity. विंग्ड स्कैपुलर एंटेरियस की पैरालिसिस का कारण होता है। इस मांसपेशी के लॉन्ग थोरेसिक नर्व नियंत्रित करती है। नर्व सीधे ब्रैकियल प्लेक्सस के रूट्स C5, C6, C7 से निकलती है, इसलिए रूट्स को नुकसान पहुंचाने का विशेष। In compartment syndrome, several clinical signs may appear as the condition progresses. Which of the following table? कंपार्टमेंट सिंड्रोम में जैसे जैसे स्थिति आगे बढ़ती कई लक्षण दिखाई दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर इस सिंड्रोम का सबसे अंत में प्रकट? पल्सलेसनेस। Compartment surgical emergency correct by increased pressure within muscle compartment is diagnosed using 5P: pain, pallor, paresthesia, paralysis, and pulselessness. Pulselessness signifies total arterial occlusion or complete ischemia by the time the pulse disappears. Artificial morbific agent given in aphorism 32. Aphorism number 32. Artificial morbific agent.
कृत्रिम रोगजनक Samuel Hahnemann stated that the artificial modeling जैसे medicine drug are act unconditionally and absolutely upon every living human organism at all time to produce their peculiar symptom, unlike natural disease which require a specific susceptibility, unconditional force capable of altering human health. एक 35 वर्षीय आदमी को सीढ़ियां चढ़ने और बैठी हुई स्थिति से उठने में कठिनाई होती है। परीक्षण करने को लेके हिप एक्सटेंशन में कमजोरी पाई जाती है। कौन सी मांसपेशी सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? Gluteus maximus and inferior glutial nerve. Gluteus maximus is the largest muscle of the gluteal region and is the primary extensor of the hip joint. It is crucial for activities that require powerful extension under resistance, such as climbing stairs arising from a seated squatting position. This muscle is exclusively innervated by the inferior gluteal nerve, L5S1S. L5S1S. Injury or weakness in this system directly presents an inability to forcefully extend. श्वास मेजर anterior MI L1 L2 L3. Gluteus maximum superior gluteus. This is incorrect because superior gluteal nerve supplies the gluteal medius, gluteal minimus and tensor fasciae. Sartorius femoral nerve. यह जांघ को मोड़ने और घुमाने में मदद करता है. Sartorius femoral nerve. ACVTC. जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया 1872, ब्रिटिश 1870, भट्टाचार्य 1920, अमेरिकन 1829. पहले जर्मन आया. Anterior cruciate ligament, medial meniscus, medial lateral collateral ligament. It consists of simultaneous tearing of three distinct structures: ACL, MCL, medial meniscus. कैलकेरिया काप का जो वर्टिगो है ना वो ऊपर बढ़ता है. कैलकेरिया काप का जो सर दर्द होता है ना ये अपोजिट दिया हुआ. कैलकेरिया काप में जो वर्टिगो होता है वो ऊपर जाने में बढ़ता है. मेनिंथिस में जो हेडेक होता है वो ऊपर जाने में बढ़ता है. हैनीमैन ने मक्साल को खोजा था, प्रूव किया था. बकनर ने मक्कोर को, बेक ने मक्साइनेटम को, अमेरिकन प्रूवर ने मर्क बिन आयोट को किया था.
25-year-old male patient was brought with multiple injury on his body following road traffic accident. Patient was drowsy and confused. Extremities were cold and clammy. Weak 3D pulse noted on auscultation, tachypnea and tachycardia. Identify the type of shock seen in this patient. एक 25 वर्षीय पुरुष वायु परीक्षण करने मरीज सुस्त भ्रमित और हाथ पैर कमजोर नाड़ी स्टेथोस्कोप से जांच करने पर सांस की गति तेज और दिल की धड़कन तेज पाई गई. Hypovolume. The clinical picture described as a classic presentation hypovolume. Severe hemorrhagic trauma from road traffic RTA. Loss of blood volume caused decreased cardiac output to compensate the body induces tachycardia and vasoconstriction leading to cold camel extremities and weak 3D pulse. Reduced brain perfusion lead to altered mental state. सड़क दुर्घटना में अत्यधिक खून बह जाने के कारण शरीर में तरल पदार्थ और रक्त की भारी कमी हो जाती है जिसे हाइपोवोलेमिक शॉक कहते हैं. खून की कमी को पूरा करने के लिए दिल तेजी से धड़कता है और त्वचा की रक्त कोश वाहिकाएं सिकुड़ जाती है जिससे हाथ पैर ठंडे और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक या सेप्टिक शॉक जिसे कहते हैं टिपिकली प्रेजेंट विद वार्म एंड फ्लश्ड स्किन. अर्ली स्टेज ड्यू टू वाइड स्प्रेड वैसोडाइलेशन नॉट कोल्ड एंड. न्यूरोजेनिक. इसमें दिल की धड़कन तेज होने के बजाय स्लो हो जाती है काज बाय स्पाइनल कार्ड इंजरी. ब्रेडिकार्डिया. Cardiogenic arise from the primary pump layer like massive myocardial infarction. Myocardial infarction. Without external major blood loss, trauma context denominating a young athlete. Which structural feature primarily differentiate juxtamedullary nephron from cortical nephron? So, juxtamedullary, the kidney contain two types of nephron, cortical and juxta. Juxtamedullary nephron possesses a very long loop of that extend deep into the renal medulla. This long loop is essential for establishing and maintaining a hyperosmotic medullary gradient via the countercurrent multiplier system, which directly enabled the collecting duct to reabsorb water and produce highly concentrated urine. Absence of vasa recta. Absence of recta. Unequally associated with a specialized long capillary network called vasa recta. Cortical nephron make up 85% of all nephron. Juxtamedullary nephron are fewer in number, 15%. Low filter, they maintain a highly efficient glomerulofiltrator to manage metabolic demands. Which of the following statement regarding the glomerular basement membrane (GBM)? GBM is a selective barrier between the glomerular capillaries and Bowman capsule. Act as a highly specialized size, selective and charge selective filtration barrier located between the endothelial cell of glomerular capillaries and podocytes of Bowman capsule. It restricts the filtration of large macromolecule and negatively charged plasma protein into urinary space while letting water and a small solute. GBM is primarily composed of collagen type 1 and elastin. Correct. Incorrect. GBM is primarily composed of collagen type 4, laminin, lidocaine, and heparan sulfate proteoglycans. It does not contain type 1 collagen elastin. Thickening of GBM is a characteristic feature of
Minimal change digit. Incorrect. The minimal change digit, the GBM appears completely normal under light wave. The characteristic defect is the effacement of podocyte food process in minimal change digit. In minimal change disease. GBM is impermeable to large molecules such as albumin. While true, in ideal solution, absolute function, the phrasing of a statement uh, B serve as a primary foundational anatomical. The rubric frequently seen in which chapter of BTV vision? Rodent as a significant reservoir for various कृंतक जैसे चूहे विभिन्न रोगजनों के लिए महत्वपूर्ण भंडारण के रूप में कार्य करते हैं. Ascariasis. Helminthi's infect caused by intestinal loudness is biologically transmitted by fecal oral route for the ingestion of water or food contaminated with human feces containing mature Ascaris eggs. Leptospirosis, a bacterial disease. Lassa fever, acute viral hemorrhagic fever. Tularemia caused by bacterium Francisella tularensis. Sensation of hoop or bend around the part. Cactus and anacardium. Cactus का तो sensation of constriction of sort as if an iron band prevented its normal movement, but it also possesses this band sensation across various organ and part. Anacardium oriental features as a distinct sensation as a plug or a hoop of bend around the part. ये अपने Argentum nitricum feature like sensation sprinkled like pain, general congestion rather than classical global hoop or band. एक मरीज को ऊपरी श्वसन पथ के संक्रमण के 2 दिन बाद हेमाचूरिया होता है. A patient present with hematuria 2 days after an upper respiratory tract infection. Serum complement levels are normal. Most likely diagnosis क्या हो? IgA nephropathy. Nephropathy. IgA nephropathy एक तरीके का बर्गर डिजीज कहते हैं. द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वर्ल्डवाइड. Defining clinical clues synpharyngitic hematuria, gross hematuria that occurs concurrently or just after 1 to 2 days after an upper respiratory tract infection. Serum complement C3C4 nuclei remain completely normal in IgA nephropathy. Post PSGN occur after latent period of 1 to 3, not 2 days following a streptococcal throat infection, and serum complement level C3 are characteristically marked reduced. IgA nephropathy, PSGN. Membranous typically present follow blow nephrotic syndrome. Full blow nephrotic syndrome, massive proteinuria edema. RPGN characterized by rapid decline of renal function over days to weeks. Crescent formation. Rudiment of true pure materia medica क्या है? फ्रेगमेंटा डी वीरिबस. सैमुअल हनीमैन द्वारा 1805 में लैटिन भाषा में प्रकाशित पुस्तक फ्रेगमेंटा डी वीरिबस को सच्चे और शुद्ध होम्योपैथिक मेडिका का प्राथमिक आधार माना जाता है. इसमें स्वस्थ मानव शरीर पर परीक्षित की गई 27 शुद्ध दवाओं के शुद्ध प्रभाव का विवरण था.
Essay on New Principle. Essay on New Principle. 1796. This is where Hahnemann first put forward the homeopathic law Similia Similibus, marking the birth of homeopathy. 1976. 1796. Removal of totality of symptom means the removal of disease. Aphorism number 17. Which of the following snake is known for his myotoxic? Sea snake. Sea snake venom are uniquely and predominantly myotoxic. They contain potent myotoxins such as phospholipase A2 variant that cause extensive widespread skeletal muscle necrosis, rhabdomyolysis. This lead to the release of myoglobin into the blood, presenting clinical severe muscle pain, weakness, and dark urine myoglobinuria, which can progress acute renal failure. समुद्री सांप का जहर मुख्य रूप से मायोटॉक्सिक होता है। इसका मतलब है कि यह विष सीधे तौर पर कंकाल की मांसपेशियों को तेजी से नष्ट करता है। इसके प्रभाव से मांसपेशियां गलने लगती हैं, जिससे मायोग्लोबिन रक्त और मूत्र में जाने लगता है, जिससे किडनी फेलियर की संभावना बढ़ जाती है। King cobra possess highly lethal, fast neurotoxic venom that paralyzes respiratory muscle. रसल वाइपल इसका हेमोटॉक्सिक खून के थक्के जमने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। बैंडेड क्रेट इसका जहर भी मुख्य रूप से न्यूरोटॉक्सिक। किंग कोबरा जो होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। रसल वाइपर जो होता है हीमोटॉक्सिक होता है, और जो सी स्नेक्स होते हैं वो मायोटॉक्सिक होते हैं। एक 27 वर्षीय मधुमेह महिला का इलाज ऐसी दवा से किया जा रहा है जो किडनी द्वारा ग्लूकोज के रिअब्जॉर्प्शन को रोकती है। ओरल एंटी किस ट्रांसपोर्टर को बाधित किया जाता है? SGL2 सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Which is true about a vehicle? Purification of sugar of milk is done by step process. सही है। Proof spirit is mixture of alcohol and purified water. सही है। Which of the following is the first rubric of intellect chapter? Activity. Absent minded, abundant, befogged, ये सब बाद में आते हैं. These are important mind intellect rubric present later in the alphabetical sequence. Which of the following is an analog of the prostate gland in females? Skin's gland. Skin's gland, also known as lesser vestibular, paraurethral, or female prostate gland, lies on each side of vestibule in females. Embryologically, they develop from the urethral epithelium. Urogenital sinus. Which is the exact same embryonic tissue that form the prostate gland. They secrete lubricating fluid during sexual arousal and contain tissue structures similar to male prostate. स्किन, जिन्हें पैरायूरेथ्रल ग्लैंड या महिला प्रोस्टेट भी कहा जाता है, ये महिलाओं के मूत्रमार्ग के दोनों ओर स्थित होती है। एम्ब्रियोलॉजी के अनुसार ये ऊतक यूरोजेनिटल साइनस से विकसित होती हैं, जिन्हें पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड बननी है। संरचना और स्राव के आधार पर इन्हें प्रोस्टेट के होमोलोगस। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये एक तरीके का बार्थोलिन ग्लैंड जो फीमेल में होती है, वो मेल में बल्ब, ऑल्सो नोन एज कॉपर्स ग्लैंड इन मेल। ये पुरुषों में कॉपर्स ग्रंथि है, इसका महिला समरूप बार्थोलिन ग्लैंड। ओवरीज एक तरीका का टेस्टिस होते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल, कॉपर्स।
एक मध्यम वायु आयु वर्ग के क्रोनिक स्मोकर की ब्रोंकियल बायोप्सी स्तंभकार कॉलमनर एपिथेलियम के स्थान पर स्क्वैमस एपिथेलियम. This process is a classic example of squamous metaplasia in the respiratory tract of chronic smoker. The normal ciliated columnar epithelium undergoes stress and transforms into the rugged stratified squamous withstand the irritation of smoke under normal physiological state. Vitamin A or retinoic acid. खराब नियंत्रित मधुमेह के इतिहास. एक 55 वर्षीय रोगी बिगड़ती किडनी कार्ड पर प्रस्तुत होता. परीक्षण करने पर रीनल बायोप्सी ग्लोमेरुलर परिवर्तन दिखाई देता है. डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अनुकूल. इस रोगी के किडनी बायोप्सी के ग्लोमेरुलर कौन सा हिस्ट्री poorly controlled diabetic present with worsening kidney function upon examiner renal biopsy glomerular consistent with diabetic. Armani Augustin lesion, however, is characterized by glycogen deposition exclusively within the epithelial cells of PCT and the straight piece of the loop of only because tubular lesion is not glomerular. It is least likely to be observed. Diffuse glomerular lesion and arterial affect different arterial signature structure. Diabetic. Glomerular changes. संभावना कम है. ट्यूबुलर लेसन है. अरमानी identify the correct combination of most and least sensitive cell to hypoxia. Most sensitive neurons and least sensitive fibroblast. Different cell in the human body possess varying capacity to tolerate oxygen deprivation. Hypoxia, ischemia. Neurons are exceptionally susceptible to oxygen lack. Central nervous system neuron undergo irreversible ischemic death of necrosis within 3 to 5 minutes of total hypoxia. Fibroblasts are robust, structurally sound connective tissue with very low metabolic demand related to neuron. They can survive severe hypoxia, severe hours without undergoing single health. मानव शरीर में न्यूरॉन्स जो होता है अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिला तो 3 से 5 मिनट तक की ऑक्सीजन मिल सके. Which of the following pharmacopoeia is unofficial? British Bhattacharya or American homeopathic? A stitching pain remaining in chest after recovery from pleurisy, carboanomalis and ranunculus bulbosus. Stitching pain remaining in chest after recovery from pleurisy, the patient recovered from the acute inflammation, but chronic lingering, localizing neuralgic or connective tissue stitch persist. Is a premier remedy for pleurisy. Intercostal rheumatism. Intercostal rheumatism and chest wall pain.
especially when severe stitching pain remain or aggravated by change of weather. Intercostal neuralgia, costal neuralgia, pleurisy. Chelidonium majus primarily act on the liver and portal system. Its classical chest symptoms with pain under the lower angle of right scapula. एक 5 वर्षीय लड़का है, नॉन रिट्रैक्टेबल फुल स्किन है, लिंग की अगली त्वचा का पीछे घटना के साथ है, जिसके प्रीप्यूशियल ओरिफिस के चारों ओर एक फाइब्रोटिक रिंग है। उसके माता पिता बताते हैं कि उसे पेशाब के दौरान दर्द और जलन होती है। पैथोलॉजिक फाइमोसिस, phimosis is inability to retract the foreskin over the glans penis. Physiologic phimosis is normal in infant and young children up to 3 to 4 years due to natural adhesion, and it resolves without intervention. Pathologic phimosis occur due to scarring, infection or inflammation leading to classical non-elastic tough fibrotic ring around the preputial opening. It causes symptoms like dysuria, pain during irritation, and ballooning of the foreskin, matching this 5-year-old descriptive perfectly. Paraphimosis is a dangerous serological emergency when the foreskin once retract behind the glands cannot be pulled forward again. Balanitis inflammation restriction, especially to the glans penis, so it can cause irritation. It does not structurally define a non-retractable fibrotic ring of the preputial sheath. सबसे लास्ट में आई थी जुगल किशोर कार्ड, उसके पहले आई थी संकरन कार्ड रिपर्टरी, उसके पहले आई थी एमएल टाइलर पंच कार्ड रिपर्टरी, उसके पहले आई थी डब्ल्यू जे गॉर्सन कार्ड रिपर्टरी. Dr. William Jefferson Gosling card repertory, every first card repertory based on morning hostel sleep. This represent the absolute earliest beginning. Emil Tyler, the Margaret Tyler introduces her punch card repertory based on Kent's repertory. Kent's repertory in the early 20th century. Sankaran card repertory is Sankaran in India later in mid-century. Jugal Kishore card launched his highly comprehensive card repertory. Which of the following remedies are aggravated before thunderstorm? Agaricus, Muscarius, and Gelsim. A patient comes with complaint that he has a recurrent and easy spraining of ankle. Which of the following? Carboanomalus, Madorinum, and Ladum. Weakness of joints leading to chronic easy habitual dislocation of brain. Sprain is a well mapped rubric in medical repertory. Are in the following content of cuboidal? पहले है रेडियल नर्व, फिर बाइसेप टेंडन, फिर ब्रैकियल आर्टरी, फिर मीडियन नर्व. क्यूबॉटल फोसा का कंटेंट, फोसा कंटेंट.
Which of the following page describe meta-analysis? Analysis of result derived from multiple studies. मेटा-एनालिसिस का मतलब क्या होता है? ये कुछ सांख्यिकीय पद्धति है जिसके अंतर्गत एक ही विषय पर पहले से किया जो कि कई अलग अलग मल्टीपल स्टडीज के परिणामों को मिलाकर उनका सामूहिक विश्लेषण। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ रिजल्ट डिराइव फ्रॉम द सिंगल लिस्ट। कंडक्टिंग टाइम स्पेसिफिक रिसर्च एनालिसिस ये समय विशिष्ट रिसर्च डिजाइन को दर्शाता है। एक टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित एक 20 वर्षीय मरीज फॉलोअप विजिट के लिए आता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में देखने वाले सबसे शुरुआती निष्कर्ष क्या होगा? हाइपरफिल्ट्रेशन। In the chronological development of diabetes, the absolute earliest function alteration is glomerular filtration accompanied by renal hypertrophy. This manifests as initial abnormally elevated glomerular filtrate rate. This stage occurs long before microalbuminuria develop and years before visible structural remodeling appears on biopsy. Diffuse glomerulosclerosis. This is a structural stage characterized by generalized thickening of glomerular basement membrane, occurring well after the initial functional hyperfiltration and microalbuminuria. Kimelson-Western change, also known as nodular sclerosis, advanced structural lesion of long-standing diabetes signify irreversible damage. Armani-Westin ये तो ट्यूबुलर मेटाबॉलिक लेसन है, इसमें ग्लाइकोजन डिपॉजिट होता है एपिथेलियल सेल। Which of the following type of cell death involve activation of caspase enzyme? Apoptosis and pyroptosis. Apoptosis is classical example of programmed cell death requiring caspase. It releases only initiated caspase like caspase 8, caspase 9, and execution caspase like caspase 3, 6, 7 systematically dismantle the cell. Pyroptosis is a highly inflammatory form of programmed cell death triggered by infection. It is uniquely driven by caspase 1 via the inflammation activation pathway. Caspase 4, 5, 11, which cleave gastrin D to form membrane pores. Therefore, both conditions fundamentally involve caspase enzyme activation. Necrosis is an accidental, unprogrammed cell death caused by severe physical or chemical injury, characterized by ATP depletion, cellular swelling, and necroptosis. While it is form of programmed necrosis, it is distinctively caspase independent pathway mediated by RIPK1, RIPK3, and MLKL proteins. Which of the following is the correct energy requirement for moderately working Indian woman with an exclusively breastfeed 8 month old? विशेष रूप से स्तनपान कराने वाले भारतीय महिला की ऊर्जा आवश्यकता 2650 किलोकैलोरी। According to ICMR, Indian Council of Medical Research, a normal mated working 2130 किलोकैलोरी per day. During lactation 520 2650. Which of the following is not a tumor marker for urinary bladder? Alpha fetoprotein. Alpha fetoprotein is a classical tumor marker centrally used to diagnose and monitor hepatocellular carcinoma, a non-seminomatous germ cell tumor of test or ovary. It has no biological correlation or role as a tumor marker for urinary bladder cancer. अल्फा फीटोप्रोटीन मुख्य रूप से लीवर की कैंसर और अंडकोश या अंडाशय के जर्म सेल ट्यूमर की पहचान करने के लिए स्थापित ट्यूमर मार्कर। Why other options are marker for bladder cancer? Hyaluronidase elevated urinary liver of hyaluronidase serve as a accurate biochemical indicator for bladder tumor. Nuclear matrix protein NMP22. Bladder tumor antigen BTM. Non-invasive biomarker and used alongside cytoscopy to manage bladder cancer. Which nerve is most likely to be damaged in
cases of anterior shoulder dislocation. Axial nerve. Median nerve, median downward arm in the vital fossa. Radial nerve uh, courses inside the radial groove along the shaft of the humerus. Regarding asthma, arsenic album Kalika have similar modalities. एकदम सही है. Regarding asthma, Kalika and Hepar have similar गलत. Hepar has completely different core modalities compared to Kalika. Hepar is a highly sensitive to cold air and dry cold winds. आर्सेनिक 1 से 2 बजे उसकी मोडालिटीज होती है और कालिका में 2 से 4 बजे की मोडालिटीज होती है. दोनों ही दवाओं के मरीज को आगे की तरफ झुककर बैठने या से सांस लेने में डाल. Qualities of physician required during case taking is giving in which aphorism? 98. Qualities of physician. In the Organ of Medicine, and Samuel Hahnemann outlined the operational manual of case taking from aphorism 83 to 104. In aphorism 98, he specifically emphasizes the essential human and professional traits a physician must embody to conduct a successful inquiry. एफरिज्म 99 में इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्यूट डिजीज और 100 पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक डिजीज. 30 साल की ओल्ड मैन है, पेरी ऑर्बिटल एडिमा है, पेशाब की जांच में भारी प्रोटोनूरिया और हाइपोग्लोबिनूरिया दिखाई दी. उसकी किडनी बायोप्सी कंगो रेड स्टेनिंग पोलराइज लाइट के तहत एप्पल ग्रीन बाई रिफ्रेजेंस दिखाती है. एमाइलोडोसिस in combination of periorbital edema, massive proteinuria and hypoalbuminemia, diagnosis of nephrotic syndrome. The pathognomic gold standard histological findings identify the root cause whether Congo red staining result. When amyloidofibril bind to Congo red dye and examined under the polarized light, they exhibit a highly characteristic apple green biofilm. This visual feature is unique to amyloidosis, where misfolded protein seed deposit in the renal glomeruli, disrupting the filtration barrier and causing nephrotic change proteins. Nephrotic change proteins. Minimal change disease. The most common cause of nephrotic syndrome in children, it shows completely normal glomeruli under light microscope and has no associated with amyloid deposits or Congo red. Diabetic nephropathy characterized by Wilson nodule, membranous spike and dome. Arrange the following oil according to their ascending saponification. सबसे ज़्यादा saponification कोकोनट ऑयल का होता है. उसके बाद आलमंड ऑयल का, उसके बाद ऑलिव ऑयल का होता है, फिर आलमंड ऑयल का, फिर लैनोलिन का. जैसे लैनोलिन का 90 से 105, आलमंड ऑयल का 188 से 197, ऑलिव ऑयल का 190 से 95, कोकोनट का 250 से 264. एक 25 साल का ओल्ड मेल प्रेजेंट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट with severe agitation, hallucination and a heightened sense of paranoia after attending a rave party. He reports feeling overwhelming anxiety, visual distortion, claiming he see color shapes that are not there based on his symptom. Which substance is most likely responsible?
bad trip, LSD. The presentation of geometric visual distortion, acute panic and paranoia after rape describe a classic bad trip induced by LSD, lysergenic acid dimethylamide. MDMA एक्टेसी सहानुभूति और ऊर्जा का होता है। एम्फीटेमिन ये एक तेजक आसारी गतिविधि को, हेरोइन सुस्ती और बेहोशी पैदा करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेमेडीज हैव हेडेक विच इज नॉट बेटर बाय नोज ब्लीड? एंटीमोनियम क्रूडम एंड अमाइल नाइट्रोसन. During fetal skeletal development, which one is the earliest to begin ossification? Clavicle. Clavicle ossification begin in 5th and 6th week of intrauterine life. फीमर जो लॉन्गेस्ट बोन है ये 7th और 8th वीक में होता है. स्कैपुला जो है 8th वीक में होता है. रेडियस जो है 7th एंड 8th और 5th and 6th. What is the first clinical manifestation of vitamin A deficiency? विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है. An elderly male is identified to have a well circumscribed lesion with the prostate suspicious of cancer. Based on MC Neil classification, एक बुजुर्ग पुरुष के प्रोस्टेट के भीतर कैंसर के संदेह में एक अच्छी तरीके से परिभाषित लीजन की पहचान की गई. पेरिफेरल जोन constitute approximately 70% of glandular prostate. Critically about 70 to 80% of all prostate cancer. Therefore, any suspicious neoplastic lesion detected in an elderly man most statistically and clinically likely to be situated in peripheral zone. Transitional zone. This zone surround the proximal urethra. It is the primary site for benign prostate. Central zone. पहले पेरिफेरल, फिर ट्रांजिशनल, फिर सेंट्रल, फिर एंटीरियर. Which of the following statement is true regarding the role of principal cell and type 1 intercalated cell of distal convoluted tube? Principal cell resorb sodium and secrete potassium and endotubular. Number of monograph in homeopathic pharmacopoeia in India. Which method of preparation of 4 note? 107. Volume 3. Autoclaving is the method of which type of sterilization? Moist sterilization. Dry heater sterilization, dry heater at high temperature, hot air even. Radiation sterilization, cold sterilization. Radiation sterilization is an cold sterilization. Filtration sterilization, a mechanical separation method passed through nitrocellulose filtrate. Nitrocellulose filtrate. Number of monograph in homeopathic pharmacopoeia in India. Which method? 107.
बेरीज आई जो है वो सबसे पहले जो मैच द लिस्ट है जिसमें 1854 में जीएच क्लार्क कंटेस्ट फ्रेमवर्क है जे गुरस्सी का 1904 में साइनोप्टिक की बाई बोगर भी आई थी 1904 में आई थी जेएच क्लार्क की लिपि रिपर्टरी 1873 1931 में बेरीज आई the following is the most radiolucent यूरिक एसिड स्टोन जो होता है रेडियो ओपिक स्टोन जो होता है कैल्शियम ऑक्सलेट होता है रेडियोलुसेंट डू नॉट एटेन्यूएट एक्सरे एंड रिमेन इनविजिबल प्लेन फिल्म यूरिक एसिड contain calcium are easily visible as bright white shape x-ray calcium oxalate cysteine stone these are genetic stone caused by an inborn error of amino acid transport they are composed of sulfur making them faintly radio opaque faintly radio ground glass in appearance not purely radiolucent not purely radiolucent xanthine stone these are the extremely rare radiolucent caused by deficiency of xanthine oxidase the rubric sexual desire suppression aggravation retibibiconium एक 28 दिनों के मासिक चक्र में 14वें दिन ओव्यूलेशन निकलना होता है उसके बाद 15 से 18वें दिन लुटियल फेज कहा जाता है इस फेज का मध्य समय इस समय लुटियल फॉलिकल से कार्पल लुटियम में पूरी तरह सक्रिय संबंध और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन छोड़ता है प्रोजेस्टेरॉन का स्तर चक्र में सबसे बड़े प्रोजेस्टेरॉन के दिमाग के एफएसएच रिपोर्टर से कम A 10-year-old child present with a generalized edema, urine also plus 3 proteinuria. In clinical term, massive proteinuria nephrotic syndrome. Massive proteinuria. Cell with a poor response to steroid and kidney biopsy revealed segmented fibrosis and hyalinosis affecting only portion of submembrane. 3.5 more than 3.5. Solid. चार साल तक है बहुत है minimal change is glomeruli look completely normal under light microscope. IgA nephropathy classically present nephrotic syndrome with recurrent across hematuria. Blood in urine right after an upper respiratory infection rather than non-hypertensive massive. निम्नलिखित में कौन सा रूब्रिक बीटीबीपी रिपोर्टरी में मौजूद है लेकिन केंट में नहीं है मैटिवनेस Dr. C. von Bonninghausen philosophical framework captured ancient phrenological and emotional construct. Amativeness represents a disposition towards love, physical affection, sexual passion.
Arrange the BTPP chapter from first to last. पहले mind, internal and external head, अरे sorry mind के बाद intellect, फिर internal head, external head, फिर which. Which of the following remedies have dark menses? Medorrhinum, Magcom, Mag, Neur, Magfos. अच्छा. Which of the following statement are true? Concept of leading question given in aphorism number 87. सही है. Aphorism especially forbid the physician from asking leading question that suggest a specific answer can be answered with a simple yes or no. Which of the following remedy is an opposite aggravating modalities to Medorrhinum? Syphlinum. This is classic comparison between time modalities and homeopathic miasm. Medorrhinum is a psychotic nosode, syphilitic nosode. In a prospective cohort study investigation, the development of inflammatory bowel disease and all the individual already diagnosed with IBD. एंजाइटी माइंड में है, कंफ्यूजन इंटेलेक्ट्स में, कलर अल्टरनेटिंग फेस में. कॉन्स्टिपेशन इन वुमेन हु आर हैबिचुअल कॉफी ड्रिंक करेगी एशिया में है. Highly specific clinical relationship with coffee it indicate for constipation in women who are a habitual coffee drinker, especially when accompanied by characteristic hysterical symptom paradoxical indication. Constipation relieved by passing a stool or pain relieved by heart pressure. Relieved by heart pressure. सात, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, कैमोमिला इसका संबंध कॉफी से है. इसमें काफी नशीले पदार्थ का दांत का दर्द या तंत्रिका बढ़ जाता है. Inappropriately called chronic disease discussion in which aphorism 77. In aphorism 77 of Organ of Medicine, Dr. Hemel described inappropriately named chronic disease, also known as pseudo-chronic disease. These are conditions that look like a chronic illness but actually arise from avoidable harmful habits such as indulging in bad food, liquor, lack of exercise, or living in unhealthy environment. What structure close the ureter entirely on both sides during abdominal course? Gonadal vessel. Feel completely exhausted whether she does anything or not. Helionias. Face pale before as well as after hemorrhage. Carbovage. Melilotus and hemorrhage are preceded by intense redness and flushing of face. Sorinum can be dark, dirty looking. Crocus sativus famously carried by hemorrhage of dark black tenacious stingy blood. A 30-year-old individual has cell that resist fast and decayes uh,
mediated apoptosis despite fast ligand binding. This question describes a defect in extrinsic pathway apoptosis death receptor pathway. Death receptor pathway. Normally, when FAS ligand bind to the fast death receptor, it recruit avidity and procapsid 8 to form death-inducing signaling complex. Signaling complex. Signaling complex. Disc, which it cleaves and activate cascade. Cleaves and activate cascade. Flash inhibitory protein has structure similar protein that bind to FADD or procaspase within the disc but lacks proteolytic activity. BCL2 an anti-apoptotic protein that stabilizes the mitochondrial membrane, blocking the intrinsic mitochondrial part by preventing cytochrome C. A pro-apoptotic protein that links the extrinsic pathway to intrinsic pathway. It is cleaved by caspase 8. Which of the following is a key difference between neurotoxin and vasculotoxic snake? न्यूरोटॉक्सिक भी जैसे यह तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है, इसके काटने वाले स्थल वैस्कुलो होमोटॉक्सिक जैसे यह खून और रक्त को, तो आंसर में क्या है? इवेलुएटिंग ऑप्शन बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड. The rubric lens cataract is seen in which eye? Explanation of other option contain functional issue like spark, double vision, blindness. Which of the following is not a true support of the uterus? Rectovaginal septum. Which of the following statements are true regarding antipathy? Can use antipathy in most urgent cases where there is danger to life and no time for homeopathic medicine. What is the hallmark feature of glomerular hematuria? Dysmorphic RBC and RBC cast. Also highly specific in glomerular disease, polar color PSGN. The rubric looking over straightforward oleander में होता है. Which of the following structure is responsible for maintaining the anteverted position of uterus? Round ligament. Cardinal ligament, also known as transverse cervical ligament, provides primary lateral structure support to prevent uterine prolapse. According to appraisal number 1, what is the main limitation of theoretic medicine? It provides a theoretical framework for understanding disease but lack practical application in it. Which of the following statement is incorrect about this trophic calcification? Bias, systemic error in determinants of vitamin C disease. Arrange the number of monograph. 107 में था तीसरा
पहला वॉल्यूम आया था 1971 में, उसमें 180 मोनोग्राफ थे। वॉल्यूम जो 1974 में आया था उसमें 100 मोनोग्राफ थे। फिर 1978 में आया था एक जिसमें 107 मोनोग्राफ थे। 1984 में 105 थे, ये तो 5 रहते हैं। फिर 1986 में आया 114 मोनोग्राफ, 160 से 1990 104, 1999 101। तो पहला वॉल्यूम क्या हुआ था 1971 में आया था जिसमें 180 मोनोग्राफ थे। दूसरा वॉल्यूम 1974 में आया था जिसमें 100 मोनोग्राफ थे। तीसरा वॉल्यूम 1978 में आया था जिसमें 107 वॉल्यूम थे। चौथा वॉल्यूम 1964 में आया था जिसमें 105 मोनोग्राफ थे। पांचवा वॉल्यूम जो था 1986 में आया था जिसमें 114 वॉल्यूम थे। छठा 1990 में आया था, 104 वॉल्यूम थे। 1999 में 100। Which of the following remedy have headache better by perspiration? G2L2 में जिसकी 2 डिलीवरी हो जिसके घर पर सीसी का टैबलेट कार्डिनल लिगामेंट। Which of the following muscle with their supraspinatus, suprascapular, supraspinatus, suprascapular, deltoid axillary, trapezius accessory, serratus anterior, long thoracic lumbar, long thoracic. All of the symptoms are errogated and 17. 27 outline the therapeutic law of cure, how stronger artificial disease dynamically extinguishes the weaker natural disease based on similarity. Isopathy has been termed गलत बात है। Which of the following is their respect? Aphorism, mission of physician, ठीक। Aphorism 2, highest ideal cure. Aphorism 3, physician qualification. Aphorism 4, preserver of health. Enlarged kidney, RPGN, amyloidosis, ADPKD, इन तीनों की वजह से होता है। आरपीजीएन acute progressive inflammatory condition है by crescent formation in the glomeruli. Amyloid is massive deposition of extracellular amyloid protein inside renal parenchyma. AD genetic condition where the kidney are progressively replaced by thousands of expanding fluid-filled cysts, leading to massive bilateral kidney enlargement. Chronic pyelonephritis. Chronic pyelonephritis. आरपीजीएन एक तीव्र और आक्रामक सूजन की स्थिति है। An alcoholic patient present with lower back pain and fever during history taking Hymanson experience similar episode in the past with amylase level being elevated. Fat necrosis.
Fibrinoid necrosis is usually seen in immune-mediated vascular injury. Coagulated necrosis is most common necrosis typical hypoxic ischemic death. Solid like in myocardial infarction. Liquefaction mast head. Their repertory was published in 1896. Dr. Calvin Benair compiled a repertory of hearing guiding symptoms of orbital. Painful oral ulcer, genital ulcer, erythema nodosum. Behcet disease. Almond oil is commonly adulterated with peach kernel along. शुद्ध बादाम का तेल एक महंगा और मूल्यवान तेल इसका मुनाफा कमाने के लिए सुनियोजित पीच कर्नेल आड़ू के बीज के तेल एरेकिस ऑयल ग्राउंड नट ऑयल ग्राउंड नट सीसन internal head begin with in general food adulteration वनस्पति घी food drinking saccharine food fortification iodine A certificate of renewal of manufacturing for sale or distribution of homeopathy medicine is issued under Form 26C. सैक्रम रक्त दूध के शुद्धिकरण के स्टेप प्रक्रिया को समझिए 2 लीटर उबलते पानी में फिल्टर किया जाता है सही बात है unconsciousness rubric is seen in which माइंड में स्पेशली गुस्सा चिंता चिड़चिड़ा इंटेलेक्ट में इसमें बुद्धि चेतना समय से जुड़े लक्षण आते हैं जो बेहोशी सूचना पूरी तरह से चेतना के खो जाने को दर्शाती इसलिए इसे इंटेलेक्ट ध्यान में रखा गया इसे प्रतियोगी मिसप्लेस्ड which section of the drug and cosmetic law provides the rule regarding provision of quantity and percentage of ethyl alcohol 106B औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली का कौन सा शेड्यूल होम्योपैथिक दवा जीएमपी परिषद शेड्यूल M1 एक 19 वर्षीय पुरुष ट्रंक पर कई हाइपोपिगमेंटेड हल्के रंग के एनेस्थेटिक शून्य पैच और अल्नर के बूटे होने की शिकायत के साथ स्लिट स्किन स्मेयर एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए नकारात्मक है ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी minimal or no cell mediated immunity
borderline lepromatous, borderline lepromatous leprosy. Positive skin scare, positive skin smears, histioid leprosy, histioid leprosy, highly specific variant of lepromatous leprosy, lepromatous leprosy. Further down towards the lepromatous end of the spectrum, lepromatous end of spectrum. Resistance action is done by vitamins. Which of the following is not published by Boning? Types of remedies जो है बोनिंग क्लेम्सन वॉन बोनिंगहॉउसन ने रिपोर्ट्री ऑफ एंटीसोरिक 1832 में अटेम्प्ट एट नोइंग द रिलेटिव प्रिंसिप होम्योपैथिक मेडिसिन कॉन्कॉर्डेंस 1843 होम्योपैथी was successfully written published 1846 टाइम्स ऑफ रेमेडीज एंड मून फेजेस ये सीएम बोगन का A motorcyclist met with a road traffic accident and a metacarpal fracture. Hypothermia ulnar. Which of the following is not published by Buber? Rheumatic PH Robert Milk. Among the following sources of homeopathic material, which source has symptoms which are re-verified? Hearing guiding symptoms. Guiding symptoms. Dr. Constant Herring masterpiece The Guiding Symptoms of Our Materia Medica occupies a unique place in homeopathy. Materia Medica Pura written by Dr. Samuel Herring. An encyclopedia of pure materia medica. Rubric mistrust is seen in which chapter of BTB mind? ये क्वेश्चन का पीछे बहुत प्यारा कि इसमें लिखा है कि which of the following statement is true regarding endocytosis? All form of endocytosis require ATP for the cycle formation process. एंडोसाइटोसिस में एटीपी की रिक्वायरमेंट सभी फॉर्म में मिस्ट्रेस इंटेलेक्ट लैनोलिन मेल्टिंग पॉइंट 42 to 50 डिग्री सेल्सियस सैपोनिफिकेशन 120 से 136 एक्सटेंसिव सतह पर तीव्र खुजली वाले वेसिकल के साथ एक रोगी आता है जिसे ग्लूटेन सेंसिटिविटी का इतिहास है डर्मेटाइटिस herpetiformis. Which of the following combination correctly describe the effect of fermentation? Efferent arterial mild constriction GFR increased. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
Oxygen moves from alveoli, simple decision, right? Patient present with fingertip changes as shown in the image. What is the most likely? Dry gangrene. Thank you.